Nevertheless, there is somewhere an absolute control, a real Ishvara. He is aware of it and knows that if he can find it, he will enter into control, become not only the passive sanctioning witness and upholding soul of her will, but the free, powerful user and determiner of her movement. But this control seems to belong to another poise than the mentality. Sometimes he finds himself using it, but as a channel or instrument, it comes to him from above. It is clear then that it is supramental, a power of the spirit greater than mental being, which he already knows himself to be at the summit and in the secret core of his conscious being. To enter into identity with that spirit must then be his way to control and lordship. He can do it passively by a sort of reflection and receiving in his mental consciousness, but then he is only a mold, channel, or instrument, not a possessor or participant in the power. He can arrive at identity by an absorption of his mentality in inner spiritual being, but then the conscious action ceases in a trance of identity. To be active master of the nature, he must evidently rise to some higher supramental poise where there is possible not only a passive but an active identity with the controlling spirit. To find the way of raising to this greater poise and be self-ruler, Virat is a condition of his perfection. So it appears that because in the current state where I am, my highest potential is being an instrument, right? And that is why that line that make me that perfect, that prayer, make me a perfect instrument of divine. Because for this to be able to be actively the controller, it has to be the supramental, above the mental domain. Yeah, yeah. It's like, imagine that you are my boss. Not imagine, you are. And I have like a lower position, and like a certain category of work comes to me, and that's what I do. And at times it happens that when I have no work, then you delegate your work, your responsibility to me. It's like when emptiness is there, so the work which the boss is supposed to do gets delegated to the lower taskmaster. तो वहां पे वो उसके पास पैसिविटी है, ये जो जब आप ये पढ़ रहे थे ना, and what you were talking about, he can do it passively by a sort of reflection and receiving in his mental consciousness. So when I'm making the mind silent, I'm becoming a like a patrata जिसे कहते हैं, like a stable container that the light comes in, but I'm still stationed here, है ना. मेरा पोजीशन वही है, प्रमोशन नहीं हुआ है, बट बॉस ने काम दे दिया है जो ऊपर के ओहदे का काम है. So but
that is not enough, because there I'm not a possessor. Like, I don't have the power. I'm doing the work of a king, but I'm not the king. So this is what, when वो जो अशुपति का हम देख रहे थे, when he has to ascend, he's rising. So where the station of the consciousness is not lodged in the body consciousness, but in a consciousness which is above the body and mind consciousness. तब आया मेरे पास full जैसे power, empowerment and control. So what he was sharing here, to be active master of the nature, he must evidently rise, not just being a receptacle, which is, as you said, is an important path of the journey, but rise to some higher supramental poise. You have to station yourself there. कि अब आप, you're not the brain lodged consciousness, you are this, lodging yourself in your true consciousness, where there is possible not only a passive but an active identity with the controlling spirit. This is what I would say, it seems to me that in other words, this can be called what we call as a pehle psychic realization, and then the spiritual realization, and then further. So first we have to get in touch with the immanent divine, the divine within, then the divine above. Take the poise as that. हमें लगता है हम वहाँ पे actually how much we are identified with our littleness that we don't dare, most of us, है ना, ऐसा लगता है कि कुछ एक आध साधु होंगे जिनका, and also that we have to lose all the lowly things that attract us, क्योंकि this demands a lot of dedication and discipline. If we want to stabilize, जैसे हम बात करते हैं Jetsunma, when yogis and Togdins, so they have glimpsed that pristine awareness and they can call it at will, like immediately they see it and they have it. But हमारे साथ क्या होता है, we may have glimpses of it because of not stable practice, it's not that okay एकदम से सोचा and then we have it and then we maintain that stability. Very soon some thought will come, some emotion will come, it will sway us away. So यहाँ पे वो practice की जो हम बात करते हैं, like wanting nothing but that poise जो भी ये बता रहे थे ना, and losing all the lower tastes. उसमें फिर inertia भी भाग जाए, है ना, और enthusiasm भी आ जाए, क्योंकि you have given that priority in your life. Otherwise, so there is no end to get distracted and so many things take over. Everything wants to be important. You want to sleep for 5 more minutes every morning and 5 become 10 minutes. So now that the supramental consciousness has been brought down, I don't know what word to use, right, by Mother and Sri Aurobindo. So now this is a possibility. So before that, it was not even a possibility, right? Like just, I know it, I'm using the mind to understand. मुझे लगता है what it appears to me again, with whatever limited we can see, is that it's now more approachable. Okay. वो आप देखो ना कि अब जैसे वो रोड्स बनाते हैं माउंटेन्स में, है ना, तो आप टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से पहले, जैसे वो तिब्बत की जर्नी बताते हैं, जाते थे लोग, है ना, अब एक ऐसी टनल बना दी है जो, है ना, मतलब कौन सा वो पासेस बना दिए हैं जो it makes it easier. So I think what Sri Aurobindo and Mother have done is this making of these ways which make it approachable. So bridging these gulfs. तो अब जैसे वो supramental का बताते हैं कि that it's here now, it's here, and that's why we see that so many of us, मतलब these workshops, spiritual, talks and even online stuff, it is so much more available. Earlier it was not this much. Online revolution, है ना, ये सारा I think it's a part of that. हमको नहीं फील होता क्योंकि हम तो पता नहीं कहाँ लॉस्ट होते हैं अपनी डे टू डे अफेयर्स में. दूध लाना है, ब्रेड लानी है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है दैट वी कांट सेंस दैट ओके समथिंग ग्रेटर इज हैपनिंग. That sense is not available. All the senses are just glued to doodh, bread and milk and butter. But some people actually were able to sense when this happened. Mother said that many people who were open to it, they sensed that something greater has happened.
Yeah, please go Yeah. ahead. And even what you made us read the other day, उसमें ये था कि for 3 years people felt that pressure है ना around the ashram that something big is happening, and so एक तो जब हुआ तब और एक leading to it that, yeah, I was saying it almost gave a visual that say there is on the top of the cliff something, a mountain, a shrine, and nobody's ever gone. So there's a complete forest. And then there is Pagdandi, right? Like 2, 3 people have gone. So now at least there's a way. And now however many people go, the Pagdandi gets wider and wider and wider and more established, right? That's why Mother invited a few warriors, right? Even a handful is enough so that it gets more strengthened. And बिल्कुल बिल्कुल. और यही हैंडफुल, इफ यू सी दोज टाइम्स ना, जो इनिशियल वाले टाइम्स हैं, अगर जो पढ़ के फीलिंग आती है दैट दोज पीपल, मतलब इट्स हार्ड टू फाइंड सच ग्रेट पीपल नाउ. आई एम श्योर दे मस्ट बी देयर. they must. जो वो कॉन्सेंट्रेशन दैट मदर डेवलप ना, है ना, कि अगर यही एंड दैट टाइम ये जैसे द फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑल दैट वाज प्रोहिबिटेड. इट वाज ओनली लेटर दैट फैमिलीज एंड मैरिड कपल्स वर इनवाइटेड, है ना, बिकॉज शी वांटेड दैट काइंड ऑफ प्योरिटी इन दैट टाइम. व्हाट यू वर शेयरिंग कि अगर वो हैंडफुल भी वो मिल जाए ना, प्योर सिंसियर, एंड विच आई थिंक दे गॉट. So it seems like steps, है ना, that we can take, are taking, possible for us is first to know that there is something more than the mind possible, you know, and then raising the level of the mind to a kind of a master, mastering the vital, mastering the as much relative degree yoga, you know. So I can't master my heartbeat at the moment, for example, है ना. I can't stop my blood flow at will. So that's not there. But still a relative control that if I want to get up, I get up, like what you were sharing, you know. And if there is an emotion coming, mood coming, and I know it's not required, so I'm able to put a stop to it. So, and raising to it a master level, relative degree, and then also making it quieter and quieter so that first it becomes that receptacle, जो भी हम पढ़ रहे थे, and then further raising the poise of consciousness, so it's not lodged in the brain and the body, but it is lodged, what we say, our subtle consciousness, true consciousness, you know, which could be even deeper in the heart or above, है ना ये. But this control seems to belong to another poise than mentality. तो ये जो greater control, greater mastery है, ये कुछ और ही poise है. मतलब ये मेंटालिटी की सर्कमफ्रेंस में, पेरिफेरी में आता ही नहीं है. मतलब उसके लिए आपको किसी और ही लेवल पे चढ़ना पड़ेगा, है ना, जैसे वो हम बात करते हैं बिल्डिंग के 2 different floors, है ना. Yeah, exactly. You know, since this started, what Acharya Prashant said, you know, in one of those retreats that we attended, that, you know, you're a person of the floors. And there are 100 floors, and being here, the maximum you can do is reach to 100. And that also requires a lot of discipline and patrita to climb. But that's your limit. But when the hand comes, so there's a part of you here, and there's a part of you above the building, say of the skies. And when you don't know you are ready, but when you are ready, that hand comes and picks you up. The maximum you can do is try to reach the highest you can, and then the domains are different. और यहाँ It's पे a ये very visual. yes, and वो hand comes and picks you exactly, and then even the lower building, Yeah. है ना, वहां पे there is this descent which transforms the lower nature. Yeah. तो बिल्डिंग भी वैसी की वैसी नहीं बची जैसी थी. That also has to change. That is the difference between probably
it might be wrong word to use, but the old school Vedantic हाँ kind of हम्म what a conversion, transformation, and this transformation of बिल्कुल the बिल्कुल physical. यस यस एब्सोल्युटली बिल्कुल मतलब रेज तो अपने आप को किया और ऊपर भी उठ गए बट नीचे वाले का क्या हुआ तो यहाँ पे ये है कि ऊपर तो गए और फिर वो वापस आओ नीचे prayers and meditations में we see again and again ना mother says that why have you called me here in the darkness again है ना there must be some purpose. It's so humbling to hear mother also say that, right? Like sometimes you also feel, yeah, I क्यों है? I mean, and like the whatever it is, the density of the material is such it feels like फंसे हुए हो मतलब नहीं if आई you थिंक pay वहीं attention. पे वो कहते हैं ना डिवाइन सैक्रिफाइस की बात दैट उनको ऑफ कोर्स फंसने की कोई जरूरत नहीं है बट उन्होंने अपने आप को फंसाया है कि पता लगे कि अच्छा फंस के तो निकला कैसे जा सकता है हाँ No, but as in if she also has touched that space of Vasna, Yeah. while being here, which is otherwise how will she show us that from where we are right now how to progress ahead so उनके लिए तो उनको आके देखना पड़ेगा अच्छा अच्छा ऐसे फंसा है अच्छा ऐसे फंसा है तू अब समझ में आया कोई अगर बच्चा बुला रहा है कि मेरे को निकाल लो तो साथ में आप जाके फंस के देख रहे हो अच्छा ये तो फिर देन यू आर फिगरिंग आउट अच्छा ये वाली रस्सी यहाँ से हटेगी ये वाली रस्सी यहाँ से हटेगी और अब निकल सकते हैं है ना सो देन यू कैन ऑल्सो गाइड द बच्चा क्योंकि दूर से खड़े होके बोलना आसान है अरे इजी तो है बाहर आ जा जंप करके बच्चे की लिमिटेशन नहीं पता आपको है ना अपनी स्ट्रेंथ तो दिख रही है एज एन अडल्ट बच्चे बच्चे में उतनी स्ट्रेंथ थोड़ी ना है तो फिर टू बी देयर इन द ग्राउंड and to see the incapacity of that mortality. just pause it for a second. I'll just But this control seems to belong to another poise than the mentality. Sometimes he finds himself using it, but as a channel or instrument. मतलब एकदम से वो कंट्रोल आ गया यू आर एबल टू चैनल इट इंस्ट्रूमेंट वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट बट इट इज नॉट इन माई हैंड्स टू हैव इट अगेन फॉर एग्जाम्पल इफ इट केम like we talk about intuition if it comes but at will I can't have intuition. Sometimes he finds himself using it but as a channel or instrument it comes to him from above. It is clear then that it is supramental, a power of the spirit greater than mental being, which he already knows himself to be at the summit and is the secret core of his conscious being. To enter into identity with that spirit. ये देखो ये हमारे लिए To enter into identity with that spirit must then be his way to control and lordship. तो अभी तो मैं आइडेंटिफाइड हूँ थॉट्स के साथ फीलिंग्स के साथ बॉडी के साथ है ना टू एंटर इनटू आइडेंटिटी विद दैट ट्रू कॉन्शियसनेस विच इज अबव द कॉन्शियसनेस involved also but yet above also the consciousness of mind life and body. To enter into identity with that spirit must then be his way to control and lordship. He can do it passively by a sort of reflection and receiving in his mental consciousness, but then he is only a mold, channel or instrument. आप देखो जैसे चैनल की बात कर रहे हैं जैसे from wherever the transmission is coming. Channel is like okay आपने open किया and the transmission comes. So when it's open the transmission comes. But
I have no control over the transmission. It may come, it may not come. I just have to remain open. So one stage is that, and one stage is becoming the transmission itself. So to enter into identity with that spirit must be then his way to control and lordship. He can do it passively by sort of reflection, receiving in his mental consciousness, but then he is only a mold, channel, or instrument, not a possessor or participant in the power. He can arrive at identity by an absorption of his mentality in inner spiritual being. But then the conscious action ceases in a trance of identity. So this is what you were sharing, that you raised yourself above, you became identified with the inner spiritual being, and the building remains the building. Conscious action ceases in trance of identity. जैसे एक समाधि वाली कंडीशन कहते हैं ना कि आप उसमें तो आइडेंटिफाइड हो गए, बट इट्स अ लाइक नीचे अभी उतरने नहीं वापस. एंड देन ही सेज टू बी एक्टिव मास्टर ऑफ द नेचर he must evidently rise to some higher spirit supramental poise where there is possible not only a passive, तो उसके ऊपर भी मतलब एक लेवल पॉसिबल है जहाँ पे not only trance is possible but also conscious control of each and every part of nature, instrumentality of nature is possible. Some higher supramental poise where there is possible not only a passive but an active identity with the controlling spirit. To find the way of rising to this greater poise and be self-ruler, Swarat, is a condition of his perfection. I think यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना, inner spiritual being, this would not be the, this may be in reference to, seems like, the, when we say immanent divine, the one within us, identified with that, I can remain absorbed there. But for a greater power, one has to rise above to a higher consciousness. Yeah, just a thought. I think it was just, let's go over it again. जैसे ऊपर करना, so it starts by saying that there is an absolute control possible. He's aware of it, and earlier on, it's a passive sanctioning witness. But slowly upholding soul of a will with the free power, as in the Purusha can be the determiner of Prakriti, right? Rather than Prakriti being controlling the Purusha can can take its back, right? Its power back. जो हम कल वो 2 who are 1 में पढ़ रहे थे. But this control seems to belong to another poise and mentality. As in पहले सब कुछ बाहर 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 हो रहा है और ऐसे लग रहा है बहुत movements हो रही हैं. And now when the Purusha controls, which a movement चाहे हो रही हो, but the full control and the anchor and the seat is of the Purusha, right? It's not, so the Prakriti is not ruling it. It is like, even the example of Sri Aurobindo in that cyclone is an example of this, right? That he is controlling nature, it dare not even enter his room. Right? So, yeah. So sometimes we find them using it, but as a channel or instrument. Yeah, that might not be a good example what I use the cyclone one. But this is different, na? This now he's talking about a different poise. The poise higher than mentality. That sometimes he finds himself using it. It may come to us in glimpses.
बट देन मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, है ना। ऊपर से फ्लो की बात है, मतलब आई मे कीप माई सेल्फ ओपन, बट अगर फ्लो आया तो आया, आई कैन मेक यूज ऑफ इट, यू नो, एज अ चैनल इंस्ट्रूमेंट. बट अगर कृष्णा डजंट, यू नो, give me the breath, then what is the flute for? Yeah. Okay. And it is clear then that it is a supramental, a power of the spirit greater than mental, which he already knows himself to be at the summit and in the secret core of his conscious being. So when he reaches the summit, then he realizes. And what is the significance of the summit here, secret core of conscious being? That the absolute control is there only, not Okay. somewhere lower, you know, then it is clear. मतलब in the sense कि आप कैसे पता लग रहा है कि कंट्रोल देयर है, कि from time to time you may become a channel and instrument, but even that is not in your hands. Okay. So when I become a channel or instrument, then I realize कि there is a that power higher, okay. which is the controller. So when he reaches that place, when he is directly guided by the boss, हाँ, he realizes there is a boss who's guiding. exactly. And here then he talks कि अब आप ही वो हो गए, so you realize yourself as that power. So we enter into identity with the spirit, must then be his way to control and lordship. So here it's saying to enter into identity with the spirit must then be his control and lordship. But नीचे वो active master और इसमें क्या difference आ रहा है? इसमें control है, but again passive control है. He's still not the decision maker. So what is the difference between this and when he was being given orders and he was I think following? मुझे लगता है लेवल का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ही इज राइजिंग, ये जो राइजिंग की बात कर रहे हैं, आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि अगर मैं बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे अपने आप को स्टेशन रखती हूँ, आई मे बी एज प्योर एज आई कैन मेक माई सेल्फ एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिसीव द सुप्रामेंटल इन्फ्लुएंस, बट येट आई एम माई सेल्फ नॉट द सुप्रामेंटल, है ना. सो देन ही सेज कि ठीक है ये चलेगा. Then I think this one, which I am not sure about, is है ना ये वाला, that he can absorption of his mentality in inner spiritual being, that there is a kind of an identification with the true consciousness, but that is with the inner spiritual being, है ना. But then अब यही होता है ना कि जैसे अब meditative poise देख लो आप, है ना, you may be absorbed in that meditative poise and on your skin may be ants and everything, it doesn't bother you, but you have no dynamic action over them, है ना. जैसे रमन्ना महर्षि का बताते हैं, and mother says that if you want just peace, then go to Ramana Maharishi. We can, we have references for that. But if you want more than peace, अब उसमें वो static peace, ये dynamic peace, है ना, which is exerting action on the nature. Yeah. So basically, the Basuri is a passive thing, right? It's there. It has capacity to have that note, but it cannot blow, say, air in its instrument. But the instrument is ready, beautiful, prepared. So that is also a level of expertise, because not all woods can, wood में हम blow करके नहीं कर सकते, but बांसुरी is ready, उसका instrument ready है. Okay, तो वो एक चीज हो गई, to become it, and then and then to become the breath itself, then to become the breath itself, है ना. अब बांसुरी के मरने की जरूरत नहीं है. अब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, व्हाई डेथ इज देयर, है ना. व्हेन आई एम आइडेंटिफाइड विद द सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, अब मेरे मरने की जरूरत नहीं है. अभी मेरे मरने की इसलिए जरूरत है क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी जो एक्टिविटीज होती हैं, दे आर ऑलवेज, दे गेट आइडेंटिफाइड विद द लोअर. तो अच्छा है कि मैं मरूं. And even the wood of the bansuri itself, that also would be a transformed, अब वो वहां तक तो खैर जैसे मदर बताती है, ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी,
which is in tune with that divine manifestation. So trance में that aspect is there, that then it's lost. The action aspect stops Action because you are aspect. lost. हाँ, And then to be an active master who's हाँ. also acting and at the same time identified as the breath, that is the higher supramental quality. Yeah. I think कहीं ना कहीं स्टैटिक एंड डायनामिक ब्रह्मन की बात करते हैं श्योर में. एक स्टैटिक पॉइज ऑफ ब्रह्मन एंड देन डायनामिक पॉइज. सो यहाँ पे बोथ आर रिक्वायर्ड, not just static. So there he says, to be active master, he must rise to some higher supramental poise. जब हम poise की बात करते हैं तो इसका मतलब मैं आई एम स्टेशनिंग माई सेल्फ देयर. एंड नॉट ओनली स्टेशनिंग. अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा वो है. जब मैं स्टेशन, मान लो आई बिलोंग टू फर्स्ट फ्लोर एंड आई एम ट्राइंग टू स्टेशन माई सेल्फ एट फिफ्थ फ्लोर, देर विल ऑलवेज बी ट्रबल्स दैट एकदम से कोई झोंका वापस उठा के मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे गिरा दे. बट यहाँ पे तो ऐसा, it seems like a radical shift, like as if you're returning on the first floor seems like an impossibility by the sway. Na? What comes natural to me is the fifth floor. That's natural. अब now यहाँ पे मेरा बैलेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैलेंस मुझे बनाने में तब मुश्किल होती है. अब जैसे मान लो मैं लंगड़ा के चल रही हूँ, तो नॉर्मल चलने में मुझे तब मुश्किल होगी जब लंगड़ाना अब मेरे लिए नॉर्मल हो गया है और चलना मेरे लिए नॉर्मल नहीं है. है ना. तो मैं बोलूंगी अरे मुझे परेशान मत करो प्लीज, आई एम ट्राइंग टू वॉक. बट जब मेरे लिए चलना नॉर्मल हो जाए तो तब देर इज नो प्रॉब्लम विद द बैलेंस. इट कम्स वेरी नेचुरली, effortlessly. I have a solidity there, I have a balance there, which comes very evidently naturally. तो I think एक बार पहले भी हमने किसी में पढ़ा था कि when only in supramental transformation this becomes our nature. कि अब वो slippery slopes की बात ही गई, क्योंकि वो नेचर ही नहीं रहा. अभी तो ऐसा लगता है कि एज इफ नेचर है बर्बादी और हम ट्राई कर रहे हैं समथिंग समथिंग बियॉन्ड अस. दिस सीम्स लाइक अस, एंड इन सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अस एंड दिस इज व्हाट वी कैन हैव मास्टरी ओवर. Nature is Barbadi, another title of a book. मतलब आप देखो ना, ये कितना नेचुरल लगता है कि अच्छा अपने ऊपर काम ना करना comes very naturally to us. But for rising in our consciousness, we have to make effort. अब वो जो मैं आपको बात करी कि the moment the officer is not there, the whole office is like tha chatter all the, that is natural. अभी मेरे लिए वो natural नहीं हुआ, sincerity and stillness natural नहीं हुई है अभी मेरे लिए. But still some progress has started that अच्छा अगर पैर रखा जाता है तो मतलब the पूंछ remains. और तभी पैर की जरूरत है क्योंकि पूंछ को आदत है बार बार टेढ़ा हो जाने की. वो पेन इज द हैमर. और आइडेंटिफाई में मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे फिर मुझे ये समझ आ जाती है थ्रू वेरियस थिंग्स, ग्रेस, ऑल द वर्किंग्स ऑफ लाइफ, कि जिसको मैं समझती हूँ वो मैं हूँ ही नहीं. एंड दैट्स वाई अगेन वो अशुपतिज योगा में हिज बीइंग है ना, रिपेल्ड द लोनेस ऑफ द अर्थली स्टेट, समथिंग लाइक दैट. वो रिपल्शन, दैट ही इज नॉट फीलिंग वन विद दैट एनीमोर. Living in our desires, expectations, demands, pleasures. अब उसको लग रहा है नहीं ये मैं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता. So that he can come back and exert greater mastery.
और तभी हमको इतनी दिक्कत होती है पुरानी हैबिट छोड़ने में, क्योंकि इतनी आइडेंटिफिकेशन है उनके साथ, अरे यही तो मैं हूँ, डिजायर छोड़ के कैसे जी लूँ, ये भी पॉसिबल है, ये कैसे जी लूँ, बड़ा दर्द होगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन है डिजायर और मेरे साथ, ये मैं हूँ। और तभी वो श्री अरबिंदो जब वो कहते हैं ना, जब देवदत्त और हरिश्चंद्र वाला, दैट व्हेन आई एम रिजॉइसिंग इन हरिश्चंद्र हैप्पीनेस, आई एम रियलाइजिंग दैट यस हिज डिवाइन सेल्फ इज मी, दैट्स व्हाई आई कैन रिजॉइस. So who is rejoicing through Harishchandra? Me only. So I'm doing a favor to myself when I rejoice in somebody's happiness, because then I identify with the divine present in all. पॉइज चेंज हो गई. और जब मैं जेलस हूं तो पॉइज आपने दूसरी ले रखी है, मॉर्टल बीइंग वाली पॉइज ले रखी है, विच सीम्स लाइक नेचुरल टू मी. But in this example, one thing is that I'm rejoicing because the divine is same. But if one is happy, like first say one was jealous, what we were discussing yesterday. So jealousy has been replaced with rejoicing. That when you see somebody achieve something, even if that was something that you wanted, for example, you're genuinely happy that okay, he is happy. But still there is this he and I, right? So this is not the state of rejoicing I'm talking about. Their rejoicing is when I can actually feel his happiness, Exactly. knowing that I am he, rejoicing. yeah. Yes, I am rejoicing through him. Yes, yes, yes. Yeah. So one has to cultivate it first, है ना, क्योंकि वो मेरे लिए अभी नेचुरल नहीं है, तो मैं पहले कल्टिवेट करके देखता हूँ, सो दैट अ स्टेज कम्स लेटर दैट इट सीम्स कि अरे यही तो था, है ना, यही तो था. ट्रू ट्रू. और अभी अभी इतना एलियन लगता है, क्योंकि अभी इतना आइडेंटिफिकेशन है जेलेसी बीइंग मी एंड यू के साथ, अभी इतना आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग अननेचुरल टू मी, लगता है ना, मतलब नहीं, बट दिस इज नॉट फीलिंग नेचुरल टू मी, ना ऐसा लग रहा है आई एम फूलिंग माई सेल्फ. तो इस स्टेज पे तो ऐसा लगता है कि फूल योर सेल्फ, यू नो, फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, फूल योर सेल्फ, बिकॉज एनी वे वी आर फूलिंग अवर सेल्फ. तो फूल योर सेल्फ फॉर अ गुड रीजन, है ना. तो एक दिस इंटरमीडिएटरी स्टेट, इट सीम्स दैट एज इफ आई एम डूइंग समथिंग अननेचुरल टू मी, क्योंकि व्हाट इज नेचुरल इज माई इम्पल्सिव इंस्टिंक्ट्स, डिजायर्स, बीइंग मी एंड द अदर. उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला, उसकी रिलेशनशिप ठीक है, मेरी नहीं ठीक चल रही, ये नेचुरल लगता है. और रोना आता है, स्टार्टिंग में रोना आता है जब दूसरे की कोई बोले ना कि कोई खुश हो लो उसके तो एक्चुअली में रोना आता है, क्योंकि अरे कैसे खुश हो लो यार, मतलब मेरी हालत देख तू, क्योंकि वो इतनी आइडेंटिफिकेशन है. और फिर अगर कोई बोले नहीं, अप्लाई द एंटीडोट टू जेलसी विच इज रिजॉइसिंग, तो रोना आता है कि नहीं करा जाता ना, कि एज इफ यू आर फूलिंग योर सेल्फ. फूलिंग इसलिए लगता है क्योंकि जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन है लंगड़ेपन के साथ. आई थिंक यहाँ पे रीज़न की बात आ सकती है कि जब मुझे दिख रहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन जो मेरा चल रहा है, हाउ मच इट इज़ हार्मिंग मी, कैन आई पिक अ relative solution which is beneficial and at least not that harmful, है ना. तो यहाँ पे रीज़न काइंड ऑफ हेल्प्स. जो हम जिद की बात कर रहे थे कि जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो जिद तो ठीक है पकड़ के बैठे हुए हैं, बट और कितना दूर जाना है सेम जिद पकड़ के, इतनी दूर तो चले आए, तड़प तड़प के, तड़प तड़प के, तो रीजनेबल भी नहीं लगता कि टू कंटिन्यू इट.
जहाँ वो उसकी बात करते हैं ना, जैसे वो इफ आई एम born with हथकड़ी in my hands, है ना, so the first time I take off the हथकड़ी it feels unnatural, as if कि आई एम वॉकिंग नेकेड, है ना, कुछ है जो कम हो गया शरीर से. So just because of that habit of being with that particular pattern, way of living, it seems unnatural. Whatever I begin to cultivate, which maybe is better. ये जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं जिनमें जैसे ईयर के होल्स को इतना बिग कर देते हैं, या फुल हैंड्स की उन्होंने बैंगल्स होते हैं यहाँ तक, मतलब उनमें विजिबली वो दिखता है ना कि व्हाट आर दे डूइंग. हमारा दिखता नहीं है, and still it is like what are we doing, right? like वो Yeah. हथकड़ी की Yeah. हैबिट. Habit की बात है, yeah. And I was reading something came across that there was a tribe, I don't know, I think in Africa, in which a longer head, you know, like this. This is the face and the head is rather than this. Yeah, It's yeah. this. So they would tie the head of babies and all for till about 7-8 years. वो head shape ही वही हो गई. And धीरे धीरे फिर वो genetically उनकी head shape वैसे होने लग गई. But when that practice was stopped, then now again the curve is coming back to normal. मतलब but ये जो हमारी identifications हैं to, I mean it's, how did that come? एंड अब सोच के देखो, मतलब हाउ इट इन द लार्जर पिक्चर, even that would have suited some or the other purpose in that particular phase where they were able to continue that tradition, है ना, मतलब जैसे how everything is made use of कहीं ना कहीं. Yeah. To find the way of rising to this greater poise, huh? To find the okay, okay. Eh, to find the way of rising to this greater poise and be self-ruler, Swarat, is a condition of his perfection. How beautiful. मतलब फाइंड द वे तो मैं तब करूँ जब मेरे को बाकी चीज़ों में मैनिपुलेशन से फुर्सत मिले. मतलब वही है, मतलब सो मच ऑफ एनर्जी गेट्स वेस्टेड हियर एंड देयर ना. ऑल दैट हैज़ टू कम बैक टू मी सो दैट दैट राइजिंग कैन हैपन. वही जो आप तपस्या जो हम बात कर रहे थे ना, यू वर शेयरिंग अबाउट दैट स्नेक रिप्रेजेंटिंग आई something like energies, as if like it's now rested, like ingathered, and now it can be channelized in a proper direction. No, when you were talking about, when you just spoke about mastering one's say heartbeat, no, I can't, but there's a yogi who could, who can, who are there. A vision came to me of, you know, a very obviously thin, not obviously thin yogi meditator, you know, kind of sitting in his poise and being able to control it at will. मतलब उसको मैं सम्राट I can say, because he has more control over than say the rest of maybe at least 3 billion other people. And yet worldly terms में he has nothing, right? हड्डियां दिख रही हैं, एक माउंटेन टॉप पे बैठा है, अपने पे पूरा कंट्रोल कर लिया है. And if I find him on the street in a main city, I would call him a beggar maybe. ना, बट वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको जो बोल रही हूँ, एंड ही नोज व्हाट ही इज. और जिसको मैं से किंग बोल रही हूँ, से डोनाल्ड ट्रम्प फॉर एग्जाम्पल, लाइक व्हाट डज ही हैव, आई शुड नॉट हैव सेड दैट, बट यू नो व्हाट डज
anybody, like even I, for example, having this, and yet having nothing, right? Because there's no solidity, no. So this basic perception or comprehension of what it means to own things, to have things, to be the master. The definition of a master is so away from where it needs to be. And I think that is why ये जो मिड लाइफ क्राइसिस और ये जो भी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको भी हम एक उससे लेते हैं कि हो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही है, क्या करोगे, है ना? इससे कि सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, एंड येट आई फील लाइक अ बेगर कि कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज व्हाट, देखो डिस्टॉर्शन की हम बात करते हैं ना, कि द डिवाइन विल इज स्टिल इन फंक्शन बट डिस्टॉर्टेड। तो ये जो आप मास्टरी की बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी वांट टू बी पोजेसर्स, and because we don't know what do I possess, so we possess things. We want to possess people, you know? I possess my child, I possess my property, I possess my car, and how much greatness it gives us, you know, for temper. It makes us feel empowered, you know, that I have something. You see, I am the master. Or that's a distorted actually version of what mastery we are all seeking. All of us are seeking it. वैसे ये भी ऑब्वियसली प्रूव होता है कि दिस पोजेशन इज मच इजियर देन दैट पोजेशन, है ना? एंड येट दिस इज व्हाट आई रन आफ्टर, नॉट रियलाइजिंग। और एक टाइम पे ये भी इजियर नहीं होती ना। आप देखो ना, मतलब इफ आई डोंट हैव मनी, फर्स्ट आई विल पुट एफर्ट टू हैव दैट मच मनी, नॉट इजी, then feel fulfillment after having a car or some property which is on my name, है ना? Only after that I can maybe realize that nothing doing really not fulfilling. लेकिन जब तक मैंने वो नहीं किया तब तक ऐसा लगता है उसमें कुछ है, what I am missing. तो वो करना भी जैसे as a part of process लगता है, not for everyone but most of us. Maybe some of us already have done enough तपस्या in the previous lives, तो पहले ही पता लग जाता है उसकी व्यर्थता. उपनिषद में जो स्टोरी है कोटिकरण की, who was a very rich I don't know financer and everything, and he would just buy anything, like, you know, he was capable of, because he had so much money and he was so proud. And then he was standing on one of the ghats and बोट में से कोई सन्यासी उतरा, और उस टाइम पे कोटिकरण इतने उससे कह रहा था कि हाँ हाँ कोई ऐसी चीज है जो मैं दे नहीं सकता, कोई ऐसी चीज है क्या जो मैं ले नहीं सकता, ऐसे करके। एंड देन ही लुक्ड एट द सन्यासी एंड ही स्टॉप्ड हिम, ही सेड रुको, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे करके ना। ही लुक्ड एट हिम वेरी डिस्टेंटली एंड सेड कि अगर तुझे कुछ देना ही है तो तू मुझे अपना अभिमान दे दे। And that just shifted him. Like he just donated everything he had because he realized that ये मैं ये क्या है जो ये मांग रहे हैं, right? I am offering him हीरे जवाहरात property, and what is valuable for him is something that I don't even know probably कि मैं कैसे दूं. And he renounced the world and started self whatever. मतलब how that switch can even happen if I'm ready. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वही रेडीनेस अब सबकी अलग हो सकती है। अब उसकी रेडीनेस ये थी कि फर्स्ट ही हैड टू अचीव एंड पोजेस एवरीथिंग, एंड और कोई उससे पहले ही रेडी हो सकता है। ट्रू। बट ये एक्सट्रीमिज्म की भी बहुत स्टोरीज में वो दिखती है नीड, है ना? कि भाई जो द कबीर दोहा दैट यू से अबाउट वी डोंट इवन बर्न फुली, अभिमान इतने पीक पे था कि अब उसको नीचे आना ही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज वाई वो जो हम बात करते हैं ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द बार,
कि पहले अभिमान आए तो सही, Hmm. डेवलप तो हो। Hmm. जैसे मदर कहती है तुम दोगे क्या, सरेंडर की बात कर रहे हो, व्हाट विल यू गिव मी, हु आर यू, कांट ऑफर जेली लाइक मास टू मी, Hmm. something solid, something which has a proper form. Okay, so maybe we can stop here itself today. क्या लगता है? Maybe we, yeah, other next one है ना? Must have कर सकते हैं. So to find the way of rising to this greater poise and be self-rulers for art is a condition of this perfection. अब ये है मतलब we have to find a way, all of us in our own ways. If this has become important for us, then we will find our way. और अभी नहीं है important तो फिर तो बात, although there are times when we talk about it, but it's not yet become important. That too might be a proper baby step on the path, है ना? Hmm. कि भी बात करनी शुरू कर दी है, बट एक्शन से देख के लगता नहीं है कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. Hmm. बट एटलीस्ट बात करनी शुरू करूँ.